Namaste Radio. Listen online at namasteradiohouston.com. Download our app available on Apple and Android products. जी हाँ, Namaste Radio. Join Youth Leadership Development Program of Houston. For the past 15 years, nurturing Indo-American youth to develop leadership skills. Program consists of student sessions with high-profile leaders in science, technology, entrepreneurship, art, and law. Public speaking on topics from Harvard Business Review's book on leadership. Service projects and field trips to organizations like Houston Food Bank. Now, accepting applications for YLDP from 11th and 12th graders. For more details, visit yldphouston.org. Navigating the complex world of health insurance can be frustrating. So why wait? Call an expert today. We present to you Simple Choice Insurance Brokerage. Call them today and get a health plan that fits the way you and your family lives. Simple Choice offers affordable health insurance for you and for the people you love. Simple Choice will make this easy for you. They will assist you through the process of selection and utilization of your benefits. Simple Choice provides excellent service. Want to learn more about individual plans, Medicare, dental, vision? Call Simple Choice today. Get a head start on your 2022 health insurance. Visit www.simplechoiceib.com/namaste or call 832-626-7791. That's 832-626-7791. Follow Simple Choice Insurance Brokerage on Facebook and Instagram. Are you feeling dull, down, and tired? Let us help you get out of this cocoon feeling beautiful and relaxed. Only at Kalasi Divas Salon and Spa. Open every Tuesday to Friday, 12 to 7, Saturday, Sunday, 12 to 6. For appointments, call 281-646-0100 or text us at 856-693-8970. For more specials, like us on Facebook and follow us on Instagram. This is Ruby, and I believe you deserve a little me time. Welcome to India House Houston. India House is a non-profit organization that serves the community by bringing resources, education, and services to Houstonians like health and fitness programs, language classes, charity clinic, and various events. Help the community now. Sponsor a program or volunteer for free food distribution at India House. Host your next indoor or outdoor events at India House facility, parties, weddings, or corporate events. Located centrally at 8888 West Belford, Houston. For details, call 713-929-1900 or visit indiahouseinc.org. Follow India House Houston on Facebook, Instagram, and Twitter. At Allings, we are all about the moments. The moments when family comes together for a sizzling hot plate and mocktails. The moments when friends order online for an at-home movie night. The moments when a child embraces their mom for the first time in years. Join us at Allings or order on DoorDash and make your moment. Halal menu available. Visit allingschinese.com. You are listening to Namaste Radio. Namaste Radio. हाँ जी तो नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज छम 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 जी हाँ तो नाचे आज छम 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 welcome back to Namaste Radio. We are here every Saturday from 10 to noon on 99.5 FM. और of course अब हम 11 बजे everybody joining us on Facebook Live. Welcome पहले तो सबसे पहले आपको. We are live on Namaste Radio's Facebook page. And अब वक्त आ चुका है जो हमारी चुलबुली सी बबली सी गेस्ट हैं वो आज हमारे स्टूडियो पे आ चुकी हैं. लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने ऑफ एयर यही बोल रही थी मैं स्पॉन्सर्स को थैंक यू करना नहीं भूलूंगी क्योंकि एक बार मैंने इनसे बातें शुरू कर दी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी. तो सबसे पहले आई वांट टू थैंक सिंपल चॉइस इंश्योरेंस ब्रोकरेज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग नमस्ते रेडियो
It is one-stop shop for all your health insurance needs. And वो जब आप उनसे बात करते हैं ना तो आपको लाइफ की भी काफ़ी टिप्पणियाँ देते रहते हैं. So do reach out to Mr. Laquinton Jenkins at 832-626-7791. Simple Choice Insurance Brokerage. It is the best way to get them is to follow them on Facebook and Instagram. Again, this is Namaste Radio, and मैं आज आपकी host हूँ वंशिका विपिन वर्मा बोल ही देती हूँ वर्मा. And I'm so happy that you are here today, and because जो आज हमारी गेस्ट है उनको मैं आई थिंक बहुत टाइम से जानती हूँ. हम जब मिलते हैं हम बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन आज सोचा दैट यू नो वी शुड सिट डाउन एंड टॉक एंड रिफ्लेक्ट एंड सी. ना समोसे ना चाय ना चाय ना समोसे की चाय. behavior, पूजा? What is this behavior? अंजलि तुम नहीं समझोगी. आपको ऑलरेडी यकीन आ ही चुका होगा कि हमारा शो आज कैसे होने वाला है, लेकिन मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिए बगैर छोड़ूंगी नहीं आपको. इनका नाम जो आज आ चुकी हैं, इफ़ यू आर वाचिंग अस एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, पहले तो डू गो टू फेसबुक, गेट ऑन नमस्ते रेडियो एंड वॉच अस लाइव ऑन फेसबुक. इन जो हमारी गेस्ट हैं इनका नाम है, बड़ी मशहूर नाम है इनका. नाम I'm going to be serious, okay? I'm pretending to be very serious today, okay? Do it. Let's do this. So it's my honor, and I want to really thank you. I want to welcome Abiya Olivia Malhotra to Namaste Radio. Wow, 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 wow. And आबिया के बारे में क्या बोलूँ यार, बट इतना बोलना चाहूँगी कि बड़ा ही इनका दिल मैंने झाँक के देखा है, बहुत ही प्यारा दिल है इनका. But no, she's an artist with a passion for expressing emotions through any form of art. Abiya has won over the hearts of people from different walks of life, performing at a variety of venues, making dozens of appearances, recording new singles. She has also earned the admiration and affection of countless fans, serving as both inspiration and role model. मेरी भी रोल, मैं भी जब बड़ी होंगी ना मेरे को आबिया बनना है. बेटा आप जो सीखना चाहते हो हम आपको सब सिखाएंगे. बिल्कुल, आज से मेरी क्लासेस शुरू करें आप. बट आबिया अगेन थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू यार, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो गई है. अब हम ज़रा वापस आबिया और वंशिका बन जाए जो हम हमेशा से होते हैं. So I think I've known Vanshika forever and then some. Yeah, like it's ever actually. Like literally, like I think 10-15 साल तो हो हो चुके होंगे. गए, हाँ. हम साथ में ही पता नहीं बचपन से ही बड़े हो गए कहीं. And you know, कहीं अपनी जगह बड़े हो रहे थे, लेकिन मिलते रहते थे एक दूसरे को. Yes. And Vanshika is an amazing soul. You know, some people you just connect with when you first meet them, and I feel like with you and me that has been the case. There's no drama. There's no nonsense of any sorts, and it's always been happiness. Like you have this super positive energy that surrounds you, and I love that. Thank you. And बोलते हैं ना जो what you are, you see that, right? And your vibe attracts your tribe. Desi vibe. So वो वाली बात है. No, I the feeling is mutual, and I love you a lot, and thank you for everything. I think हमेशा मेरे हर मैं जहाँ भी मैंने कुछ भी मीडिया में मैं वहाँ प्रकट हुई हूँ. वहाँ आबिया ने हमेशा मेरे को कॉल करके बोला नहीं यार, I want you there, I want you to be a part of it. So yes, of course, and I'm so honored that you finally made it to Namaste Radio. तो पहले तो आज शुरू करते हैं. वेलकम जी वो हो गया. लेकिन tell us about your journey. आप इंडिया से कहाँ से हैं, कब आई, all of that till अभी तक. So you know how there's an old saying that you fresh off the boat. Like yes. बहुत सारे लोग देसियों का बहुत मजाक बनाते हैं. Yes. You're a fob. You're fresh off the boat. I literally could relate to it. So Papa is a sailor. The first time we came here was on a ship. You literally came on a boat. Yes. So anytime somebody would say that to me when I moved here, I'm like, I'm not even offended. I literally did come on a boat. Wow. So no, I didn't know that. And so I got to see the world through a bigger lens, through a bigger point of view, and it changes you as a person because
देन जब आप उस बड़े से शिप में छोटा सा इंसान वहाँ डेक पे खड़ा है और आप देख रहे हो बड़ी बड़ी सी वेव्स हैं, तो इट्स जस्ट यू एंड मदर नेचर. Right. In that moment, I know there were a lot of moments I realized that I am nothing compared to what Mother Nature is, and I'm nothing compared to what this universe is. So मेरी जो छोटी सी ego है वो छोटी ही रहे, वो मेरे सामने, तो वो मेरे लिए सही है. Right. And I think that's what's transformed me over time, and including Mama and Papa, they've always just taught us कि अगर अच्छा कर सकते हो करो, अगर बुरी thought भी आ रही है, take a step back. That's Don't true. don't talk, don't do anything, take a step back, go think over what you're about to do, because every action has a reaction. True. right? True. जो आप डालोगे यूनिवर्स में वो कहीं ना कहीं लौट के वापस आएगा. Yeah. Yeah. So अगर आप जानबूझ के किसी के साथ बुरा करोगे just because in this moment you're like सुनीता ने मेरे साथ यही किया है, कल सुनीता के साथ ये होना चाहिए, मैं करूंगी. राइट. कि मतलब वो नहीं था बचपन में कि आपने मम्मा मुझे थप्पड़ मारा तो भाई को भी पढ़ना चाहिए, यही Right. विधि का विधान है. वो Right. विधि का विधान नहीं है. Yeah. राइट. विधि का विधान ये है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. True. True. सो आज अगर आपने बोला भाई को थप्पड़ मारो तो कल तो चपेटे तुम्हें ही पड़ने वाली है वापस. देखो कल सास से पढ़ सकते हैं. नहीं यार, मेरी सास बड़ी प्यारी है. अरे मैं पर्टिकुलरली आंटी जी नमस्ते. नमस्ते आंटी जी. वणकम. That's what you say in Malayalam? No, that's probably more Tamil. All the Malu friends, please let us know how do you say namaste in Malayalam. Please. In Malayalam, I know milla milla, मतलब slow slow. तो वो आबिया के डिक्शनरी में नहीं है. I know Sherry. Oh, Sherry. Okay. Okay. Okay, so where in India are you from? I am from Jammu and Kashmir. अरे वाह. Yes. Dogri. Oh I wow. have some Dogri blood in me. So let's just reverse. Mama's from Jammu and Kashmir. Papa is pure-blooded Punjabi from Calcutta. Okay. कहीं ना कहीं ये मेरा हो ही गया. Exactly. और उसका product ये आपके सामने बैठा है. And I was raised mostly in Jammu, partly in Delhi, and then all across the world. Okay. So we never really stayed in India for more than 2-3 months. School जाते थे, exams देते थे, आगे बढ़ते थे, and then we spent a lot of time in Jammu. Never really had an opportunity to go to Kashmir per se, but Kashmir was always fun. Right, And right. Jammu में बहुत time गुजारा है. अभी it's like my second home. Wonderful. Yes. So you said your dad's a sailor. So was he in the Indian Defense or something? Defense Services? Merchant Navy. He was in the Merchant Navy. Yes. Wow. मैंने roller skating जो है वो Ship में करी है. हाँ. तो जब लैंड पे वापस आए तो मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि nothing was moving anymore. Everything was still. You needed that moving. Yes. वाला वो. कि खुद हाँ. इधर से उधर चले जाए. हाँ. आलसी हूँ ना मैं. लैंड पे आके मेहनत करनी पड़ रही थी. शिप पे खुद हो रहा था. That's funny. So Houston में finally settle हुए कितने time हो गया? Since 2004. Oh wow. For So 2 years. About same time. About the same time. So 2 years that I was here, I was with my bade mamu and mami in California. And कोई भी किसी के लिए इतना नहीं करता जितना मेरे मामू मामी ने मेरे लिए किया. They literally looked after me like I am their own child. And hats off to them. I mean, they've taught me so much. मेरी बेचारी मामी ने तो मुझे रोटियां बेलनी भी सिखाई थी. I love the mamu and mamis. I owe a lot to my mamu mami also. So Right? mamu mami, we love you. We love you guys. You guys are amazing. Yes, mere pyare mama is no more, but I always say I'll see him soon, sometime up there. And but mami is in Delhi, so yes, big shout out to her too. We'll see her soon. Chalo. Yeah, we'll see her soon. Chalo Delhi. Chalo Delhi. Let's go. देखा ये शो आज ऐसे ही होने वाला है guys. Live with it. क्योंकि इसमें कोई सर पैर नहीं बट बहुत सारी इनर फीलिंग्स और लव बहुत होने वाला है. बट दैट वाज आप कैसे ह्यूस्टन में लैंड हुई उसके बाद. हाँ, प्लेन में और शिप में. लेकिन उसके बाद हाउ हैज योर जर्नी बीन सो फार फ्रॉम आफ्टर यू लैंडेड टिल हियर? You've done a lot of things, and I know, right? And I see you at a lot. Like every time I'm seeing you do different things. Like कभी एक्टर होती हैं आप, कभी सिंगर होती हैं, कभी आप फायर फाइटर बुला लो के साथ आप थोड़ा आग लगानी है. आप मतलब फायर फाइटर्स को आज लेकर आई हैं. एक्चुअली कल मैंने इनको बोलना था कि अगर हैंडसम है तो 3-4 एक्स्ट्रा ले आए प्लीज. हाँ? रोशन बेचारा देख रहा है वरना मैं सही जवाब देती. रोशन तुम चले जाओ अभी फिलहाल 4 मिनट के लिए नहीं देखो. वो वैसे भी इंडिया चला गया है. ओहो, इंडिया से कुछ चाहिए?
जरूर जरूर मैं ऑफ एयर लिस्ट पूरी बना के देती हूँ. So रोशन कौन है? Okay, let's just dig into that question because the thing is, she's like literally waiting for the end of the show to say that, but let's just get into it. रोशन कौन है? इससे रोशन वो इंसान है जिसने मेरी हर खामी को खूबी समझा. वाह 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 रोशन वाह. मतलब तुमने अभी तुम्हें यहाँ से थप्पड़ पड़ेगा. तुमने मैं बोलने वाली थी सारी आबिया और मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया. तुमने सारी आबिया की खामियों को खूबी समझा है. बट तुम्हें कैसे पता कि वो खामियां थी? क्या पता वो हमेशा से खूबियां ही थी, बस उसे वो बोलते ना हीरे को परखने वाला एक जौहरी चाहिए होता है, बस वो है वो रोशन. वाह वाह, I'm so good यार, I'm so good. Vanshika, I am so proud of you. In this moment, like तूने दिल खुश कर देता यार. I came back after that mistake, you know. I love it. So, I've had a lot of experiences in life. Yeah. And a lot of people always ask me, you've asked me, how are you this happy all the time, right? I'm not always happy. What I've come to terms with is if I'm not feeling those happy energy blasts in my heart someday, I'll just accept it. Today's just not going to be a good day. Yeah. And मैंने पहले भी कहा था मैं बहुत आलसी इंसान हूँ. मुझे कोई काम नहीं करना है तो बस नहीं करना है. वो कोई और कर दे सामने से तो मैं खुश हूँ उसमें. उस ब्रेक पे बटन लगा के कौन दे रहा है मेरे पास? Exactly. तो मेरा पूरा खानदान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर इससे काम करवाना हो तो कभी कभी जो है दिल करता है तो मैं कर दूंगी. राइट. जैसे घर पे चोर्स होते थे. आई लव वाटर. अब से बर्तन मैं धो दूंगी, सफाई नहीं करूंगी, वो कोई और करेगा. So he's been very accepting of those flaws per se. I call them flaws because most people, men and women, उनको होता है यार घर आओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, सब कर लेंगे. मैं ना, ये ना हो पाएगा. एक काम करूंगी मैं बस. मतलब ये तुम्हारी क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में सोप डालने वाला लड़का है. तुम कपड़े डालोगी, वो सोप डालेगा और उसके बाद कपड़े धुल जाएंगे. मैं ड्रायर में डालूंगी और फिर वो संभालेगा, वो फोल्ड करेगा और संभालेगा. बट यस, कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ फॉर हमने बड़ा अच्छा वीडियो देखा था आपके प्रपोजल का एंड यू नो शॉक लगा था मुझे. शॉक. हाँ, वो सुन रहा है अभी. मुझे शॉक. आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस. आपको भी मिस्टर रोशन, थैंक यू. एंड मिस्टर रोशन कहाँ से हैं? So he's originally from Kerala. In India. He was raised in Mumbai and he's done a lot of Malayalam films. There's one in particular called Dry. He won a lot of awards for it. And then he's done a lot of projects here. He's in Los Angeles. Abhi hum ise bol rahe move ho jao Houston. Houston is much better than Los Angeles. I can just say it on air. हम खुले आम बोलेंगे ऑन एयर की क्या बात है. Houston is much better. आ जाओ. And यहाँ पर खाना भी बहुत मस्त मिलता है. हाँ. And please don't tell us that you're taking Abiya away from Houston. So no, you are coming to Houston. आप घर जमाई बनेंगे और ये बात हो चुकी है. मतलब ह्यूस्टन के घर जमाई, मतलब वो मतलब नहीं था, ह्यूस्टन के घर जमाई, क्योंकि ह्यूस्टन अब हमारा घर है. आप आएंगे तो घर जमाई हो गया. Exactly. और फिर लॉस एंजलिस मेरा ससुराल है. तो जब हम आ जाएंगे तो वो ससुराल गेंदा फूल होगा. He's so going to hate us. But अभी कमेंट आएंगे नीचे. हाँ, तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा. बाद में देखूंगा. और एंड चारू, हे चारू is my bestie. She says namaskaram in Malayalam. Namaskaram. Thank you, Charu. So to all our Malu friends, namaskaram. So we tell me about your actor, your MC, your singer. ये मतलब इतना सारा, how are like पैदा ही ऐसे हुई थी, मतलब इतनी टैलेंटेड? पता नहीं कहाँ से कूट के टैलेंट भरा है. I always wrote. So something I had done even as a child, I think I inherited that from my Nana ji, is anytime I felt any type of way, instead of verbally communicating, I would go write. Oh, okay. And from that came poetry. And एक बहुत पुरानी मेरे घर में बातें भी तक होती हैं. मैंने एक once I was missing दादी a lot, and मैंने एक पेंटिंग बनाई थी स्कूल में. It was my grandmother and I.
and I was in I think first grade or second grade, and तब मुझे समझ आई मॉडर्न आर्ट क्या होती है. क्योंकि मैंने वहाँ पर बना तो दी पेंटिंग लेकिन फेस नहीं बनाए. यार मैं छोटी सी थी, क्या मुझे पता था ना. But you were futuristic. Apparently, yeah, we'll go with that. और वो पेंटिंग स्कूल वालों ने किसी एग्जीबिशन में डाली, वहाँ से किसी ने खरीद दी और उसको स्विट्जरलैंड भेज दिया. और मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रही. अच्छा, पहले तो बड़े खुश हैं घर वाले, अरे वाह इसकी पेंटिंग स्विट्जरलैंड गई है, सब बड़े खुश. देखी नहीं अभी तक किसी ने. फिर वो हमारे स्कूल की मैगजीन में छप के वापस आई पेंटिंग, और मम्मा मेरी शक्ल देख रही, बेटा व्हाट इज दिस. क्या बनाया, क्या डंडिया बनाई है, इतनी पतली तो नहीं थी तुम्हारी दादी. तभी उन्हें समझ आ गया था शी इज डिफरेंटली टैलेंटेड. कोई ना कोई तो इसका टैलेंट अप्रूव कर ही देगा. बट वही से वेरी टैलेंटेड. लेट मी टेल यू दिस, आप बहुत टैलेंटेड हैं क्योंकि हमने आपको यू नो एमसी करते हुए देखा है. You keep the crowd going, you keep the event so lively. हाँ, वो अलग बात है कि आप क्राउड में चुन चुन के लोगों को बहुत परेशान भी करती हैं कि उठो बातें करो सबके सामने. मेरे Vanshika in particular. And और आप गाती बहुत बड़ा अच्छा हैं. And I've seen you know and of course आप एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हैं. तो you are very talented. And ये चीज़ें एक साथ एक जन में आना थोड़ा बड़ा कम होता है. You know, कॉम्प्लिकेटेड सी बात. अब यू सी मैथ नहीं आती मुझे. 2+2 नहीं आता. कभी कभी एरर हो जाता है. कभी कभी एरर हो जाता है. 2+2 22 भी होता है. आई नो राइट, समटाइम्स हो भी सकता है. डिपेंड्स आप किस एंगल से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, राइट. सो सब यू नो एवरीवन आई थिंक अराउंड मी नोज कि मैथ मुझे ना दी जाए. टिप भी कैलकुलेट करना होता है. कभी यू नो होटल या रेस्टोरेंट में जाके तो भाई भी यही बोलता है, बेटा आप रहने दें, आपसे ना हो पाएगा. I'll do it. लाइक आप ऐसे काट क्यों रही हो. मैं कहा नहीं, मैंने राउंड ऑफ किया. सही नहीं, आप रहने दो, आपसे ना होगा. बट where my mind doesn't understand numbers, I think it understands other things, right, per se. And music happened to me over time. मेरे घर का असली म्यूजिशियन है भाई युवराज. He and मैंने उन्हें गिटार बजाते हुए सुना है. yes, वो गिटार बजाता है, ड्रम्स बजाता है, और उसको किसी ने सिखाया नहीं है. वो आप उसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो, वो उठा के वो उसको बजा लेगा. wow, he is like literally he's that talented. मुझे गाना किस लहजे में गाना है वो उसने सिखाया है. And the other person who groomed me on my stage presence and everything else is Inder Singh Randhawa. You guys know him as ISR. Yes, so yes. मेरे जितने projects होते हैं, even when I have to MC, like he goes through with me कि show flow क्या है, tell me किसका show है, क्या है, let me tell you तेरा stage presence कैसे होना चाहिए. So it's been years of a lot of support on every angle possible for me to be who I am today. Wonderful. Yes. Wonderful. And you know, nothing in life is possible without this true positive support. Right. Because हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई हमेशा एक support के लिए ज़रूर होता है. But yes, I just don't want to only touch about your the talent part of it, because I don't want so talented. because everybody knows her as, you know, the singer, the actor, the MC. लेकिन there is a business woman that I know, the business side of Abiya. ये कह तो रही है कि मुझे मैथ नहीं आता, ये नहीं आता, but ये काफ़ी मतलब you know, I've seen her, you know, working very hard. You know, अपना सपना money exactly, क्योंकि पैसा तो भाई important तो है ना. पैसे के लिए हमारी एक वो मेन जॉब वाली जॉब होती है, एक मेन बिजनेस होता है. So tell us about that. You've been associated with the medical side. And अभी आपका एक नया business venture भी है Sugarland में जो आपने है. So tell us about all of that. Yes. So हूँ मैं Indian. आप लोगों को पता है, सब Indians, और मेरे मम्मा पापा भी अभी सुन ही रहे होंगे. जिंदगी में आपके पास दो ही ऑप्शंस होती है, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, वरना उसके बाद तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको, राइट. वो हम लोगों की शक्लों में लग नहीं रहा है. हाँ, तो जब उन्होंने मेरी वो पेंटिंग देखी थी, बस उन्होंने कहा एरर हो गया यहाँ पर, ये थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है बॉस. अभी ये ना ये डॉक्टर बनेंगी ना ये इंजीनियर बनेंगी. सो दे मुझे उन्होंने उसी टाइम पे सिखाना शुरू कर दिया था. सो माय पेरेंट्स डिड मल्टीपल थिंग्स. मम्मा वाज इन द पुलिस सर्विसेज इन दिल्ली, and Papa was a sailor, but they also had a mineral water plant.
Wow. So they managed multiple things, and they were raising all of us. Mm-hmm. It was just watching magic unfold. Wow. Similarly, Mamu Mami in California, I was watching magic unfold with them. Mami was a full-time pediatrician. Mamu worked for the state of California, and yet they had enough time to have investments everywhere else and raise their kids as well, right? They worked as a unit. They worked together. Together. Mm. Everything they did was together. And वो देखा देखी as मैं भी business करना चाहता हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ? Exactly. और फिर I decided कि as much as I enjoy being on the artistic side of things, I want to be on the business side of things as well. पैसा मुझे भी चाहिए, क्यों मैं क्यों पीछे हटूँ? हम क्यों पीछे रहें? And so that's where we started doing. It started with event planning, then started with Dharmatma uncle and Neelam auntie being my pageant godparents. Yeah. They trusted me with Miss India Texas, and it's been 6-7 years now that I've been representing IFC and Dharmatma uncle Neelam auntie in Texas. Hopefully माता रानी की कृपा रही तो इस बारी हम फुल ऑन शो करेंगे दोबारा से मिस इंडिया टेक्सास। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये जम्मू का असर है, अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो आपको पता ही क्या है। नहीं, ये पंजाब दिल्ली सबका असर है। ये पूरा दिल्ली एंड अप एंड हरियाणा एवरीथिंग का असर है। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। Okay, now we're done. Back to this question. Yeah. So from that, then I met Shobi. Shobi, his goal was to become a director, and I was like, तुम अकेले ऐसा कैसे, friend? हम भी साथ में करेंगे ये. So we made Shobi Films a little bit bigger. From that came Ehsaas Zindagi. And Ehsaas Zindagi, we shot the pilot episode with Sana Zayed Roshan. Right. Mr. Roshan came in. Roshan. And Aman Singh Mukhar. And from all of that came my biggest supporter on the business side is Anil Damani. 27th Entertainment and 27th Investments. Wow. He guides me. He mentors me. He coaches me on what to do, what not to do. And these people have trusted me blindly. And through Shobi, I met Jalal. Jalal was like, "Arey, kuch to baat hai." And Jalal, again, trusted me blindly with the Artsy Soul. And Artsy Soul was Jalal's baby, which he was like, you know what, come on board. Let's make this happen. Let's do something more. And मेरे बचपन की सबसे fondest memories with my friends, with my cousins, with mama, baba, bhai, everybody have been creating something new. And at the Artsy Soul, that's what I love. When people come there with their kids, with their friends, even just for a date, you're creating something together, whether it be pottery, mosaic, canvas. It's a fun experience. And it's BYOB, so if you want to, you can. Wow. You want to book a party, you can. But it's literally us giving you an experience, a memory for a lifetime. So if you're in Sugarland area, come to the Artsy Soul. And it is in Telfair. It is in Telfair. It is literally on University Boulevard and New Territory. तुम आई हो मेरे वहाँ आसपास भटकती भी नजर आई। मैं टेलफेयर से मेरा बहुत पुराना नाता है, तो उधर सब कुछ आता जाता. But I have seen it, and I told Abiya I'm definitely going to be there because painting while you drink is an amazing thing, you know. So yes, why not? हम सब adults हैं, क्यों नहीं? देखा वो जो बचपन में एक तस्वीर बनाई थी जो किसी को समझ नहीं आई। हाँ, मैं बोलने ही वाली थी, वो आज इसलिए बनाई थी। Exactly. By the way, drink का मतलब क्या? पानी पीना है यार, मतलब आपने क्या समझा? हम तो हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं। exactly. हमारी त्वचा कहीं खराब ना हो जाए। Exactly. So I think I've done that somewhere, long time ago. Social के साथ हम लोग एक painting और थोड़ा तो मुझे वो सब बहुत पसंद है. And definitely, if you guys want to book an event like that at the Artsy Soul, सबसे पहले तो Artsy Soul को follow करें Facebook पे. Yes, the Artsy Soul, or even on Instagram, it's Artsy Soul Studio. Definitely follow us, or you can just go to artsysoul.com, and we have our kiddo camps. So we do a lot of summer activities for the kids.
अब छुट्टियां हो जाए और कहीं अगर आपको ना जाना हो तो अपने बच्चे आप हमारी स्टूडियो में लेकर आए ताकि वो कुछ सीखें आर्ट के बारे में. Exactly. Even if you want to plan like a couple's night out, like 5-6 couples want to come together, make these amazing, beautiful things. Definitely. So Artsy Soul for sure. मैं ज़रूर आने वाली हूँ बहुत जल्दी. मेरे को आपके साथ ये बुकिंग करनी है. तो मैं अपनी आर्ट दिखाऊंगी. वो बचपन वाली या अभी की? अभी वाली भी बेचारा हमारा इंस्ट्रक्टर इज लाइक बहन तुम रहने दो. So you have different instructors over there. Okay, wonderful. So when we book or anybody books, they will be guided by someone over there. और पता चला सब people are like अरे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो भी नहीं आबिया वहाँ खड़ी है. हेलो आज हम बनाएंगे मेरी वाली पेंटिंग. Exactly. So मैं इनको एबी भी बोलती हूँ क्योंकि बड़े अलग अलग जो दिल से आवाज आई ना वो नाम बुला लो. तो मैं उसी ने ना बार वो हो रहा है. मैं आबिया बोलना मैंने सीखा नहीं कभी. मैं एबी में तो एंड में मैथ्यूज भी लगने वाला है. हाँ आबिया ओलिविया मल्होत्रा मैथ्यूज. वाओ नंबर नहीं हो जाएगा ज्यादा बट ठीक है. बट एट दिस पॉइंट आई वांट टू थैंक दिस ऑर्गेनाइजेशन. एक ह्यूस्टन की बहुत ही दिग्गज नॉन प्रॉफिट है. आज हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो रही है. So we want to thank them. They're doing a lot for the community. And I am talking about India House Houston. I love India House Houston. Woohoo! We all love India House Houston. And they do a lot of free programs. The best way to get more information is just visit their website, India House Inc., indiahouseInc.org, or follow India House Houston on Facebook and Instagram. But there's this one event which is coming up in June. 26 जून को. सो एग्जैक्टली आज मार्च है. 3 महीने के बाद देयर इज एन इवेंट एट इंडिया हाउस 26 जून को, 26 जून को. सो सेव द डेट. इट इज एन इवनिंग विद द लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर. ना करो. Yes, Sunil Gavaskar is going to be at India House Houston. No way. आप लोगों को पता नहीं, मैं तो वहाँ पे फ्रंट सीट पे मिलूंगी आपको. बस सुनील गावस्कर की गोद पे बैठने की जिद मत करना बहन. अब तो वैसे भी नहीं कर सकते. Oh no. अब तो आप engaged हैं. Okay, I forgot. Sorry Roshan, these are just fun times. यार don't मतलब ऐसे हम बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, ऐसे मत सोचो. But an evening with Sunil Gavaskar at India House Houston. So save the date. It is on June 26th. It's a Sunday. 5:30 to 8:30 p.m. and it will be held at India House. And India House कहाँ है सबको पता है, 8888 West Belford. And this is the event organized by India House but and H2H Foundation of Sunil Gavaskar. ये उनका खुद का foundation है. And ये foundation जो है it provides free surgeries for children suffering from heart defects. Oh wow. So for details and sponsorship you can contact India House directly. You can call Colonel Vipin Kumar at 713-929-1900 and बस अपने फ़ोन पे ये सेव कर लीजिए. And for all details visit indiahouseInc.org. Now आबिया आपके पास वापस आते हैं और आपसे ये बात करेंगे. आज मैं ये 11:30 का मैंने ऐड स्किप कर दिया है क्योंकि आपसे बात करने में इतना मज़ा आ रहा है. So the real आबिया को क्या पसंद आता है? The acting or the side, like किस तरफ झुकाव ज़्यादा है? एक्टिंग साइड में और या आर्ट साइड में या सिंगिंग साइड में ज़्यादा, या फिर you are like that when you're at work and business ज़्यादा लगता है? कैसा सवाल पूछ लिया तुमने? ये तुमने ऐसा मुझे सवाल पूछा कि तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट केक खाना है या फिर पाइनएप्पल पेस्ट्री खानी है. So if you make a pie chart, मेरा हर चीज़ equally divided है. I see. And हमने fair enough. हमने कोई पर्सनालिटी टेस्ट भी किया था बिकॉज जो डॉक्टर आई थिंक अनिल्स बहुत है मेरी लाइफ में. डॉक्टर अनिल पटेल ऑफ चॉइस स्पेशलिटी फार्मेसी, दैट्स माय फुल टाइम गिग. I like how you said it's my gig. It's my gig. It's my full time gig. Monday to Friday 9 to 5 में वहीं पाई जाती वहीं मिलेंगी. आजा वो भी शुगरलैंड में. And so even him, like he had me do a personality test because he was like, let me figure out कि तुम्हारा interest ज़्यादा किस में है so I can support you on that. And he was like, ना करो यार, हर चीज़ equally है. And to me it keeps my mind creatively active when I'm doing multiple things. On the acting side, Gunjan Kutiala, she gave me my big break with it was
called Grey Stories, and then it was released in Mumbai as NRI Wives. Wow. And I got to play a super lead role next to Samir Soni and Jugal Hansraj and Gunjan herself. And Samir Soni is so handsome, na? he's so cute. He's cute. But I always keep telling him, I was like, Neelam ko lekar aao yahan par, hum sare ikathe show karenge. Wow, Yes, wow, wow, it will be and it'll be exciting. fun. Yeah, Some and good-looking people. very good looking people, and even their daughter, like, she's super cute. But Samir sir coached me during our session, so he told me कि आप script की नियत को समझो, understand the intent behind the scene, then the conversation will flow. Right. If you're just going to memorize everything and blurt it out, it's not going to happen. फिर वो fake लगेगा. If you wanted to not look like acting, जब आप acting भी कर रहे हो, understand what the script is. Right. And so we did that, and I'm super happy with my work in it, and hopefully, it gets released worldwide soon. But that was Gunjan trusting me on that end. And then Tarun Verma, he's done a film called Conception. He's done a lot of different projects, but Tarun is another person who came from the medical field, but also had a passion for the arts. So Tarun trusted me with doing a smaller guest appearance in his movie called Conception. And from that, he then created an entire script. It's called Ek Raat, and that's based on me being the lead. Oh, wow. Or when he shared the story with me, I was like, yaar, na karo, na, humse na ho paega. And he was like, ho paega, ho paega. I was like, nahi ho paega. So it's a very challenging script, but I'm excited. Uske liye, he wanted Ek Raat to be an episodic thing, but each story will be a different story based on a girl and how a girl can wear different hats. And not, everything is not just at face value. Jo dikhta hai, aksar wo hota nahi hai. And I'm excited. So we're going to start shooting for that soon. But I did an original song for it. Wow. So Ek Raat ke liye, and he gave me the concept. I made the song, and he was like, ऐसा भी हो सकता है तो अच्छा निकला. I'm like, I know, right? Oh no, इतनी talented मैं. इतनी talented लड़की बचपन से ही. बचपन से ही. Congratulations and good luck for all these projects and all your future endeavors. And उस बात पे आपकी जो मिस्टर ये गुलाब जामुन क्यों कह रहे हैं? वो पता नहीं मेरे को. वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने बोला है हमारी शादी में मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि गुलाब जामुन का होना बहुत ज़रूरी है. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मेरा पति हो, पेरेंट्स हो, मेरे ससुराल वाले हो और गुलाब जामुन. और अगर गुलाब जामुन ना हो तो मैंने एंट्रेंस नहीं करनी. तो ठीक है, फिर राजा स्वीट में एक्स्ट्रा ऑर्डर दे देंगे गुलाब जामुन के. एंड रोशन ऑल्सो कह रहे हैं आई हाय. ओके, आई हाय टू यू टू रोशन. I said, I love you, Roshan. Oh my God. I love seeing this side of Abiya. You guys have no clue how much fun I'm having here today. I am proud I'm turning pink here. Can somebody stop this? Next time से हम रोशन को भी यहाँ बुलाएंगे. So हमने काफ़ी बातें करी हैं, लेकिन मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मुझे ये ज़रूर एक चीज़ कहना है कि हमेशा जब भी मैंने आपको कुछ करते हुए देखा है, लाइक कोई भी, you've always put in your like 100% to it. Like if you are that playing that beautiful girl of that music video, for that 1 month पूरा, then you're you are that for that 1 month. तो अभी मतलब अब आप रोशन के साथ जब शादी वादी हो जाएगी तो बस आप बीवी बन के रह जाएंगे. हाँ, मुझे अनुपमा ने सिखाया है कि अच्छी बीवी कैसे बनना है. एकता कपूर ने मुझे रोज़ाना ट्रेनिंग दी है. बैठा के मैंने 3-4 घंटे ट्रेनिंग ली है कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है. और मैं पूरी सज धज के ही सोने जाऊंगी और सज धज के ही उठूंगी. पूरा सिंदूर लगा के वो 50 तोले का मंगलसूत्र. So please make note, Mr. Roshan, 50 तोले का मंगलसूत्र चाहिए. It's going to be like many आ रहा है इंडिया से. Bye. मैं यही बसने वाला हूँ. This will be a long distance relationship from now. But that's the kind of fun we are having. I'm really enjoying this. So more about Abiya. Okay. आपकी ज़िंदगी में, I know आपने बहुत लोगों के बारे में अभी मेंशन किया, and of course हर मोड़ पे कोई ना कोई अलग हमारे ज़िंदगी में हमें सपोर्ट करता है. लेकिन if I have to ask you, who is that one person of your life, the biggest support? And मुझे आंसर शायद पता है, लेकिन मैं फिर भी ये आंसर क्वेश्चन पूछूंगी.
who is that one person who stood with you through thick and thin? Through everything. It's my cousin and my best friend, Raman Jain. Everybody knows him as Ray. दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मेरे साथ ही रहता. And so him, much love to Ray. He's also the one, I think Roshan spoke with him before he spoke with anybody else about the proposal. यार ये लड़की ठीक है ना रमन मतलब तू भाई है but ठीक है ना मतलब सच में बता दे. Him, he's been there through thick and thin, and Inder and Chandni and Vinu and Vinay. Like, no matter what has happened in my life, from a friend standpoint, all of these people have stood their ground right by my side and never said कि ये लड़की गलत है या ये गलत हो सकती है. हाँ, जहाँ मैं गलत हूँ ये सारे खड़े होके बोलते हैं भाई तुम गलत हो. Stop this. What is this behavior, Pooja? But जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ इन्होंने दुनिया की परवाह ना करके मेरा साथ दिया. Wonderful. And there's this another place that I want to mention at this time is another organization actually. It's YLDP, Youth Leadership Development Program of Houston, because they are very important. And जैसे हम यहाँ पे इतने यूथ बैठे हुए हैं, हम यूथ ही हैं यार, यूथ बैठे हुए हैं, एंड हमारा जो बचपन से डेवलपमेंट हुआ है इधर उधर लोगों की वजह से हेल्प हुई है. आई लाइक टू ऐड द पंजाबी एक्सेंट टू इंग्लिश हियर एंड देयर. लेकिन YLDP के बारे में ज़रूर I want to tell you all is because I've seen this organization mold a lot of high schoolers for a long time, and the admissions are open again right now for the year 2022-2023. तो ये साल का जो सेशन होगा उसके लिए the last date to apply is May 2nd, 2022. So आपके पास थोड़ा वक्त है. Go get your applications. You can find them at yldphouston.org. yldphouston.org. So definitely they'll mold your kids for the high schoolers at leaders in fields of politics, business, government, philanthropy, culture and art, entrepreneurship, science and technology. इनके साथ leadership programs होते हैं. They are typically the guest speakers on their meetup. So it influences your kids. It molds them into it. So nurturing the Indo-American future leaders since 2007. YLDP. And again, it's yldphouston.org. It is very important. And I know India House and Vibin Uncle, they support a lot of mentorship programs. और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मोल्ड करें, उन्हें गाइड करें. वो जैसा देखेंगे वैसा वो करना चाहेंगे. बिल्कुल, राइट. सो अगर हम उनको अनुपमा दिखाएंगे रोजाना तो फिर वो बड़े होके अनुपमा बनना चाहेंगे. लेकिन the thought process behind this is आपको मौका मिले, take that opportunity, mentor a kid, mentor other kids as well. सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं. I see my parents, and I know you see this with your parents, with your niece and nephew. They're teaching them Hindi. They're teaching them हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, and Kaylin, Arya, Akshay, all of them, right? वो जितना Christmas celebrate करते हैं, उतना वो दिवाली भी celebrate करते हैं. That's beautiful. And so they understand that, whatever they choose to be at the end of the day is their choice. But it is our duty to present them with the options. जो पता ही नहीं होगा तो फिर वो आगे क्या करेंगे ना उसका. Absolutely. That's very true. And I'm glad that we have people like, our parents and a lot of other people who want their kids to learn and know. जो हमने सीखा back in the day. यार हमारे nieces and nephews के पास तो हम भी हैं. हम उनको गाइड करते हैं कि आप बड़े हो कि यूँ बनो. ये हमारी रोल मॉडल हैं, इनसे सीखो बेटा. कुछ नहीं करना है जो वो सीखो. तो जैसे आपने बोला फ्यूचर जनरेशन को बताना है, वैसे तो हम बहुत ही यूथ हैं, लेकिन जो आजकल के एस्पायरिंग एक्टर हैं, सिंगर्स हैं, जो MC भी बनना चाहते हैं. When you do MC, sometimes you don't realize people are like, young kids are looking at you like, wow, I wish I could talk. Like maybe 15 years back, I used to hear a radio show and I used to be like, wow, I wish I could host one day. Things change. So what would you like to give as a tip to someone who's listening to us right now who is not sure कि किस डायरेक्शन में क्या करूं and कहाँ कैसे बनूं मैं आबिया.
अगर आपको मेरे जैसे बनना है तो प्लीज जस्ट कांटेक्ट मी, मैं सब सिखा दूंगी. और कांटेक्ट रोशन पर I know, right? रोशन भी like ये ऐसी कांटेक्ट ये गलत करती रहती है. So my tip to everybody will be, no matter what you do it with honesty and dignity. And baki everything will flow. When I pick up that microphone to talk, I understand कि मुझे किसी की disrespect नहीं करनी है. Right. तो अगर I ask somebody something, that's why I always look for familiar faces in the crowd. You start a conversation with familiar faces, everything else then flows. Yeah. Right? So that's my tip. But I've always just followed that. No matter what I do it with honesty, with dignity, and I trust the process. Yeah. And that's it. Like, you do that and give it a shot. Try to karo. Right. अगर आप try ही नहीं करोगे, then it's not, you won't know कि आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं. Correct. Right? So अगर आपके दिमाग में ये thought आई है कि मुझे actor बनना है, take an acting class. Yeah. But take a class. Yeah. Don't just think कि आप कल शाहरुख खान बन जाओगे या आप कल कंगना रनौत बन जाओगे. Those stories happen. Yeah. But entertainment is also expensive. Yeah. Now I'll be realistic, right? Yeah. अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ग्रोथ भी बहुत रेयरली होती. Right. And there's every third person in India right now who wants to be in the entertainment industry, Yeah. right? Talent की कमी हिंदुस्तान में नहीं है. मैं तो ह्यूस्टन में भी बहुत देखती हूँ. Right. हर कोई बनना चाहता है बहुत कुछ. Right? अभी जी म्यूजिक पे भी कमी नहीं है ह्यूस्टोनियंस की जो हैं जी म्यूजिक पे, right? Yes. And however, like, overall, अगर आपका इरादा पक्का है and that is what you want to do, then accept the struggles that are going to come with it. And it's not just the mental stress, the physical stress, it is also the financial stress. Yes. And a lot of people don't see the financial piece of it. And I'll tell you, I think ये मैंने कभी नहीं बताया किसी को, सिर्फ Raman, Inder and Roshan and Chandni know this. But Firefighters Bolalo happened because उस time, and I'll openly say it, I was dating someone. और हमारी हमने बात करी, हमने कहा वो शादी हो रही है कि नहीं हो रही है. He specifically said नहीं करनी. So I had a midlife crisis moment. So instead of going and buying a new car, a red convertible, मैंने music video बना डाली. No, but that's the best part of life, and you can channelize your sad, negative, positive energy into Everything. something together, and you made it so positive and so beautiful. वो पता नहीं तुमने Firefighters बुला लिए, मतलब इससे किसी ज़्यादा. ने देखी है वो म्यूजिक वीडियो ना देखना, मेरे बाकी गाने देख लेना. No, but It's amazing. It actually is. I would like to say that. Please go watch. What is the exact title on that it's called? Firefighters Bulalo. Firefighters बुला लो. इसमें इन्होंने गाना गाया, बहुत ही सुंदर गाया, and It's with Jyotika Tangri and Intense, and the entire thing was Inder and Raman, like, literally they stood by me and they were like, and the music sad video to was तुझे रहने नहीं beautiful. देना. Beautiful. Yeah. Everything was, Inder wrote the lyrics. He taught me how to say it. He's like, ये थोड़ा rap तरीके का part है जो तू नहीं गाती है, तेरे लिए बहुत different है, but I want your launch to be great. Right. And then the universe makes magic happens. It got released on MTV India. Wow. And never in a million years did I think कि यार मैं MTV पे होंगी. Like, बचपन में हमेशा सबको देखा था वहाँ पर, और वहाँ पर जम्मू से मेरे cousins जो हैं, they were sending me little snippets. I was like, oh, ये तो मैं हूँ. I saw you sharing a few of those. Yes, I was like so excited. I was like, oh my God, that's me. But then you also have to continue putting content out there. Yes. It's not about that one music video or the one film that you've done. It's the continuity of it. And though I love that side, I also wanted to be on the business side. The मैं थोड़ा divided था. No, that's perfectly fine, because you're an independent woman. You have to look at everything that is going on. So Right. It's not easy. ऐसा नहीं है कि बस पेड़ हिलाया, पैसा झड़ रहा है और हम म्यूजिक वीडियो बनाए जा रहे. You have to balance everything, and that's why I wanted to bring that businesswoman side of Abiya today on our show, because सबको लगता है ये तो बस चुलबुली सी मस्ती वाली. No, but there is another side to her. There is a little bit of brain that works. कि मुझसे आपने, मैं हमेशा घर पे एक बात बोलती हूँ, घाटे का सौदा ना मैंने करना ना किसी को करने देना. Right. That's it. फायदे की बात करनी है तो we can sit and we can talk. Absolutely. हमारे पास exactly about 9 minutes हैं. So
there's one very important question I want to ask her is, कुछ आपने, you touched upon it a little bit, but कैसे कहूँ कुछ, पूछ लो यार, कुछ I don't want like कभी किसी को कुछ offend हो कुछ चीज़ें, nothing to do with you, but जब लोग सुनते हैं तो बोलते हैं यार ये कहीं हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहे थे, but मेरा कुछ नहीं जाता, तो देखा हम यार मेरे को एक म्यूजिक वीडियो में रोल मिलेगा? Yes, of course. यही मेरा क्वेश्चन था. नहीं, I'm just kidding. So you clearly said that we have to keep making music videos, we have to keep doing things in life, but उसके पीछे हमें बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है, फाइनेंशियल हो या पर्सनल मोटिवेशन चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है. एंड बहुत सारे मैं लोगों का एक ईगो देखती हूँ यहाँ पे, एक म्यूज़िक वीडियो बना दिया बॉस, अब तो मैं शाहरुख खान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ. आई डोंट सी दैट इन यू. आई स्टिल सी यू एज आई हैव नेवर सीन लाइक कभी आबिया को मिले हैं तो यार हटो अब मेरे साथ फायर फाइटर्स चल रहे हैं, अब तुम तो पीछे हो जाओ, ऐसे कभी नहीं देखा है. एंड आप that is my first part of the question, like what is it that always keeps you grounded, because I see people, they बस थोड़ा कर लेते हैं और अपने आप को पता नहीं कहाँ का बहुत कुछ समझते हैं. You may know a few, I may know a few, and we all may collectively may know a few. But yes, लेकिन you've always been grounded and very approachable, हमेशा प्यार से मिलते हो, बड़े तमीज़ से मिलते हो, चाहे किसी से भी मिलते हो. And दूसरा, you're always very happy, and like you had mentioned a part of it that it's not easy to always be there, because हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे पर्सनल लाइफ में होता है. I've been in media and there have been times where I was feeling very, very, very bad, very, very, very low because of whatever I have been through in my life. And but उठना था, सजना था, निकलना था, जाना था, and you still have to put up a show. Right. So how do you manage that? How do I manage all of that? पहला क्वेश्चन क्या था? ईगो कैसे मैनेज करती हो? ऐसे याद ही नहीं रहता, लोगों ने बोला. फायर फाइटर्स कौन है भाई? अच्छा मैं थी. Oh, who this? यार मुझे लगता है मेरी ईगो का मैंने क्या करना है. Again, right? Like I think it was my upbringing, what my parents had taught me, or what my mom and mommy had always taught me. Right. कि ईगो से मैंने क्या कर लेना. अगर मैं सामने वाले का भला कर सकती हूँ, that's good. नहीं कर सकती तो मैंने सिर्फ इज्जत से ही बात करनी है और कुछ नहीं करना. अगर वो नेगेटिवली मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, देन देयर इज़ गौतम बुद्धा ने किसी को एक बार ये कहा था कि आई विल जस्ट नॉट एक्सेप्ट इट. राइट. अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देते हो, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, then that's on you. It's getting returned back to you. I am not accepting it. That's what I do. I don't accept it. So I'm like la la la. मैं अपनी दुनिया में मगन, right? Yeah. Yeah, that's pretty much it. And I've always dealt with life, with whatever life's thrown my way. Yep. If I cannot convert it into positive energy, then I let it go and I let it flow. That's it. That's amazing. It's not affecting me. उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. Yeah. And that's pretty much it. And there is no And ego. actually recently I went through that kind of thought process and I was feeling कि क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, या I was feeling a little low about someone. And then I told myself, I was like, you know what, it actually has nothing to do with me. Yeah. Maybe it's their issue, their problem, and I am out of it. Because if it was something to do with me, तो मेरे से बोला जाता, मुझसे discuss किया जाता. Right. So I just totally kept out of it, and that's exactly what I do. I'm like, कोई भी negative energy आ रही है, out. Exactly. And on the other end, आप इतनी खुश कैसी रहती हैं? खुश मैं ऐसे रहती हूँ. I choose to be happy. Yeah. I can either choose to let the negative energy affect me, or I can follow the great Dumbledore's great advice from Harry Potter. Happiness can be found in the darkest of times if only one remembers to turn on the light. Right. You find happy moments that you can reflect in your brain and you can think about them to bring a smile to your face. And kabhi I'm just like, bye, can I talk to your kids? Yeah. Because his kids will do these random things where I'm like, oh, I'm smiling now. Yeah. And फिर मुझे याद आता है कि मेरे लिए important क्या है. मेरे लिए important है family. मेरे लिए important है friends like you and all of my other people. मेरे लिए important है कि
मेरी वजह से कोई और सैड ना हो, खासकर जानबूझ के. अब गलती से अगर मैंने कुछ कर दिया तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि आई कैन करेक्ट इट. एग्जैक्टली राइट. पर अगर आप बताओगे नहीं तो यार मैं इतनी भी महान नहीं हूँ, थोड़ी सी महान हूँ. नहीं, कई बार हो जाता है, you know, sometimes Right. because what is right for me may not be right for you. Agreed. So I may do things thinking I'm right, but it may turn out that तुम तो, but अगर तुम मुंह फुला के बैठ जाओगी और मुझे नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगा. I'm not, you know, भगवान नहीं है हम. तो हो भी नहीं सकता. exactly, I'm happy being a human. भगवान लड्डू खाते हैं, हम गुलाब जामुन. I like that. So that is a great advice, and सबको भी यही कहना चाहूँगी अगर कोई सुन रहा है. This was a random question I wanted to ask her because मैं आबिया को हमेशा खुश देखती हूँ, and a lot of times I get that feedback from people, you know, because I see that in her, and I've gotten that feedback about myself also. Like when they describe me, like, oh, ever smiling, ever happy, ever energetic, and I'm like, ऐसा नहीं है. Maybe सुबह तो मैं ऐसे नहीं था. सुबह तो मेरे से कॉफी भी नहीं बनाई जा रही थी. बोला था किसी को भाई बना देना प्लीज. Yeah, because I was talking to a group of friends and I was sharing with them about my depression and my phase of my life where, you know, it still hits me here and there. It does, yeah. But they're like, what? Tu? I'm like, huh? Because we choose to always be happy and show that happy part of it. क्योंकि अब मैं वो बिल्कुल एक बॉटल हाथ में लेके बार फिरा के कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ. अनुपमा ने भी हमें यही सिखाया है. आप रो cry to let the energy just get released, cry to make yourself better. Yeah. But do not cry over someone or over something without having a plan in action. Yeah. रो, उसके बाद you know what, get up and do it. And you can't control other people's actions or You can't. whatever they're doing, right? Right. So yeah, that's something I really wanted to ask you, and I wanted people to hear that because a lot of times हमें पता नहीं चलता है, but we get roped into that thought process, you know, and a lot of people are like, you know, कि अरे यार ये मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बर्बाद है. लेकिन नहीं, थोड़ा एफर्ट करो, बाहर निकलो, and you know, it helps your mental health basically. It does. And I always tell anyone who's ever asked me this, I always tell them the only person who can pull you out of that deep hole is you. Yeah. No doctor, no lawyer, no therapist can do that unless you yourself are ready to pull yourself out. Yeah. वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक खुद की हेल्प नहीं करोगे वो नहीं दिखेगा, वो आउटकम नहीं दिखेगा. I agree. So you have to ask yourself कि आप अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हो या नहीं. Yes. Be your own support, be there for yourself. और अगर लोग समझे कि हाँ भी पागल है, सिर्फ अपने आप से ही बातें कर रही है, अपने आप से ही बातें कर रहा है, so be it. But that's a conversation you need to have with yourself. Conscious clear रखो, सबके साथ इज्जत से रहो, तो बाकी you know माता रानी will make everything else happen. इसी बात पे जोर से बोलो. जय माता दी. मैं नहीं सुनिया. जय माता दी. सारे बोलो. जय माता दी. That was the fun show. I think one of the most amazing talks I've ever had with one. 12 बज गए. Let's 12 बज गए. चलो गुलाब जामुन लेने चले. But Abiya, thank you so much for Thank being you. here, and काफ़ी आज आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर किया जो शायद कभी हम दोनों ने बैठ के आपस में भी नहीं बात करी अभी थी. रोशन को एक्सप्लेन करने पड़ेगी बातें. रोशन यहाँ पे जो हुआ, जो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे. वो हुआ ही नहीं. I don't know what you're talking about. मैं तो ये नहीं थी वो. So thank you again, and एक बार फिर से, because we want to talk about Artsy Soul in future, we want to feature it. How can they get in touch with you about Artsy Soul? Contact me on Facebook. It's Olivia Malhotra. On Instagram, again, Olive Oil 10 or Olivia Malhotra. Or you can just go to artsysoul.com and contact us from there, or just visit the Artsy Soul. मैं वहीं जा रही हूँ अभी. Exactly. आ जाओ. अगर आपको आबिया को कहीं देखना है, आ जाओ. So thank you so much, Abiya, Thank for you. being a part of our show today. And I'm so happy that you finally made it here. And बहुत मजा आया. नमस्कारम, नमस्ते. And आप सब जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, we will be back next Saturday exactly at 10 a.m. on 99.5 FM and of course on Facebook Live on Namaste Radio. तो भूलिएगा नहीं, follow करिएगा Namaste Radio on Facebook and Instagram. And
actually हमारी apps पे और हमारी website जो है namasteradiohouston.com, you can listen to our songs. 24/7 music is playing. So have fun throughout the week. And next Saturday, we'll be here back at 10 a.m. Thank you. Thank you. Hearts to everyone. Thank you. Bye-bye.